देश के सर्वोच्च पदों में आसीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ ऐसा क्या हुआ कि फूट फूट कर रोने लगे। आखिर 5 मिनट के दमदार भाषण के बाद क्या हुआ जिसके बाद वो खुद को रोक ना पाए और मंच पर बिखर गए। चलिए जानते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ ऐसा क्या हुआ। दरअसल एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां आर्मी हेलीपैड पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो यहां से राजभवन पहुंचे। कुछ देर बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के गोल्डन जुबली समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे। 45 मिनट के संबोधन में उन्होंने बार बार 1989 में अपने साथ सांसद रहे डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह का जिक्र किया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही उपराष्ट्रपति मंच से उतरने लगे, उन्होंने डॉक्टर पाल को गले लगा लिया। दोनों के बीच पुरानी यादें साझा हुई। अब तक तो सब कुछ ठीक था, ये भावुक क्षण था। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। भावनाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा कि डॉक्टर पाल के गले लगते ही उपराष्ट्रपति खुद को रोक न पाए। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ महेंद्र सिंह पाल के कंधे पर हाथ रखकर बाहर निकले और करीब 10 कदम चले और उपराष्ट्रपति बीमार पड़ गए। जी हाँ, उनके सीने पर जोर से दर्द उमड़ा और हर कोई भौचक्का रह गया कि आखिर इन्हें क्या हो गया। वो एकदम बदहवास हालत में आ गए और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने संभाला और किसी तरह से कुछ देर बाद ही उनकी तबीयत सामान्य हुई है। दरअसल उनके सीने में दर्द उमड़ा है और यही दर्द 3 महीने पहले भी उमड़ चुका है। तब उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई थी और लगातार उन्हें शिकायत मिलती है सीने में दर्द होने की। 73 साल की उम्र है और उनकी बीमारी की वजह से वो लगातार इमोशनल भी होते हुए नजर आते हैं। वहीं उन्हें संभालते हुए सांसद महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि हमारी पुरानी दोस्ती है। उपराष्ट्रपति थोड़ा इमोशनल हो गए थे, अब ठीक है। हम दोनों सुप्रीम कोर्ट में साथ थे, हम लोगों का दौर अच्छा रहा। मुझसे सिंपैथी रखते हैं। उन्हें लगा कि मैं थोड़ा पीछे रह गया। मैं उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने राजभवन जाकर उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया था। मैं उनसे मिला हूं, अब वे स्वस्थ हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल आराम करने की सलाह दी है। उधर विश्वविद्यालय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति का स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से फिलहाल हल्का डिहाइड्रेशन बताया जा रहा है। हालांकि चिकित्सकों ने एहतियातन उन्हें कुछ समय के लिए विश्राम की सलाह दी है। कार्यक्रम को भी संक्षिप्त कर दिया गया है। इसके अलावा हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल और अन्य अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। उनका जन्म 18 जुलाई 1951 को राजस्थान के कालीबंगा हनुमानगढ़ी जिले में हुआ था। वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपनी शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त की है और बाद में कानून की डिग्री हासिल की है। वे एक वकील और समाज सेवी भी रहे हैं। इसके अलावा वे कई वर्षों तक भारतीय संसद के सदस्य भी रहे हैं। अब चलिए जाते जाते आपको वो भाषण सुनवाते हैं जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। Just reflect, young boys and girls, because you will have to learn about it. Unless you do it, you will not know it. What happened to the press? Who were the people put behind the bars? They became prime ministers of this country. They became presidents of this country. That was the scenario. And that is why, to make aware our youth, as indicated by the Honorable Governor, our median age, youth demographic dividend, the age is 28 years. We are a decade younger than China and US. And you are the most vital stakeholders in governance, in democracy. You therefore cannot forget or cannot afford not to learn about that darkest period. Very thoughtfully, the government of the day decided that this day will be celebrated as Svidhan Hatya Divas. The celebration will be that it will never happen again. The celebration will be that those guilty, those who allowed such kind of transgression of humanity's rights, spirit and essence of the Constitution, who they were, why they did it,
In the Supreme Court also, my friend will bear me out, one judge dissented, H.R. Khanna. And it was commented by a leading newspaper in the US that if ever democracy returns to Bharat, a monument will surely be built for H.R. Khanna, who held his ground. 50 years ago, this day, the oldest, the largest, and now the most vibrant democracy went through difficult air pocket, unexpected hazard in the shape of headwinds, nothing short of earthquake to destroy democracy. It was imposition of emergency. The night was dark. The cabinet was sidelined. The beleaguered Prime Minister then, facing an adverse High Court order, yielded to personal gain, ignoring the entire nation. And the President trampled constitutionalism, signed a declaration of emergency. What followed for 21-22 months was turbulent period for our democracy, never imagined. The darkest period of democracy we had the occasion to see. 140,000 people were put behind bars. They had no access to justice system. They could not vindicate their fundamental rights. 9 high courts, fortunately, stood the ground. And they held emergency or no emergency. Fundamental rights cannot be put on hold. Ruling firmly that every citizen of the country has a right which can be fructified by judicial intervention. Unfortunately, the Supreme Court, the highest court of the land, got eclipsed. It overturned the verdict of 9 high courts. It ruled, it decided 2 things. Emergency declaration thereof is a decision of the executive, not open to judicial review. And it is a decision also on the time for how long it will last. And that citizens do not have fundamental rights while there is emergency. It was a major setback to the people at large. वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।